Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Know Your Heroes, a tale of women in aviation. Today we have a very known aviation personality with us. She has experience of more than 17 years within aviation industry. We have very wonderful and dynamic Miss Samra Azhar with. Currently she is serving in Air Blue as Senior Manager Cabin Safety and Flight Services. Do you know Fatma? She started with Air Blue as a cabin crew and was promoted to leading cabin crew and then cabin safety instructor. She has been a manager flight services in Air Blue for approx 5 years. You know, Fatma, this is such a fan moment for me to actually share her wonderful profile with our young aviation aspirants and talk about her wonderful portfolio and assignments and projects she has been associated with. She is also a crew resource management facilitator. She is also a youth mentor, and that's how she is helping our youth. Welcome on board, Ms. Samra. Would you like to please highlight about your education and different profiles and portfolios so that our aviation aspirants and young people can hear you, get the help out of your experience? Welcome on board, Ms. Samra. Thank you. That was very huge for me. आपने मेरा बहुत ज़्यादा heavy introduction कराया है. मैं उसको मुख्तसर करके बताती हूँ. Um, as far as my academics are concerned, I joined Air Blue when I was intermediate. So because that was a prerequisite of the job of cabin crew trainee. After that, I continued and I became a leading cabin crew or cabin supervisor or senior flight attendant, which you may say, and a safety instructor and a CRMI instructor. And then I gave some of my time to office as a flight services assistant manager alongside with my flying and my studies. So I continued to do that and then continued with my bachelor's. I did simple BA from University of Karachi, and then later on in 2015 I started my master's program with the Pakistan Air Force 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐵 University and completed in 2019. I did it a bit slow because of my other assignments at my company, and currently I'm master's and in aviation management and doing my job as senior manager flight services and cabin safety. My niche is cabin safety because of my experience and my studies and my work, a lot of work and research over cabin safety in Pakistan. So, in my position currently, I work with civil aviation very closely with Pakistan Civil Aviation and very closely with Airbus industry in terms of cabin safety and the publications they give us. So that we derive our own publications, make our own procedures, and train our cabin crew. So that is a little bit of my educational and work background. Other than that, I keep doing short courses so that I stay in touch with studies. Other lines and fields and other areas of my interest are training, of course, and um, in order to enhance training, and after obviously when COVID hit, digital marketing became very very famous. So I'm doing a little bit of that. I'm learning actually. So certification bhi karungi inshallah, and then little bit of this and that. And then I did I did recently started a platform called Gateway, which my sisters actually run, and I am part of it. And I do sessions for youth, young people, and especially people who do not have enough resource or funds to pay for heavy training. So I give them a bit of that training, superficial though, not in depth, but I give them an idea how things happen in corporate world and how should they be prepared. That I preparation to enter in corporate world, I thoroughly train people. So this is a little bit of my introduction. Thank you. Thank you, Miss Samra. तो सुना Mashallah, Miss Fatma आपने? Yeah. I am very excited to meet Samra. Samra, no wonder, mashallah, you're being very humble with yourself. Actually, I would like to add, you're being very humble with yourself. With the profile of yours, mashallah, you're an asset, definitely an asset for the aviation industry. And now we can all definitely see why you're an inspiration and a mentor for a lot of people around you. तो मेरा फिलहाल आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा समरा ये होगा कि आपके बारे में हमने कुछ थोड़ा और भी जाना था, एंड फ्रॉम योर प्रोफाइल व्हाट वी फाउंड आउट वाज इनिशियली
during your metric science, and as well you after your matriculation you did a diploma of associate engineering in electronics. So it Yes. seems like you had an inclination towards engineering, or probably engineering, Oh, yeah. electronics and electrical, and Yes. then you're in a completely different field. What led Yeah. to the change? ये तो बताएं. That's a very, very interesting question, and thank you for asking that. When I in 2004 I was given admission in University of Karachi honors stack. I was continuing with my studies in 2004, and then I applied for a position of cabin crew trainee because it was the need of family that we should earn. 2 days later, I got a call from AirBlue. At that moment, AirBlue was in pre-launching phase in 2004 February. I got a call, and I went for an interview, and it was in an interview with 𝐸𝐴𝐻 Abbasi Sahab. I did display my desire of being an aeronautical engineer and continuing my studies over there. He told me that the position you are here for is for cabin crew. Do you know that? I said yes, but this may be my entry to the field of engineering. He said, okay, we can talk about it later. But that we went ahead with our professions as cabin crew, and I developed interests there. And since I had it in me, so I went into publications and studies of aircraft and then cabin safety. I ended up in cabin safety, and I have keen interest in that. But I have never lost interest in aeronautical engineering. I'm very, very impressed by you ladies. So Thank that's you, how it Samra. got a little diversion over there. But And Atma, Miss Samra की training sessions कुछ मैंने attend किए, and I wasn't aware her educational background and profile back then, and I always felt कि there is some association with her trainings. क्यों? क्योंकि she always used to include technical aspect of everything, and I used to feel very connected कि यार it's so easy to connect with her during her training sessions. Now I know why. So Fatma, if you are done with your current question, may I ask Miss Samra, आपने इतनी मजे मजे की exciting बातें बताई हैं, and we know about your profile. So what does your usual day looks like, if I may ask? A weekday is very busy because it's office throughout, and office has since it's an operational job, I may not be able to pinpoint that this is what I do. Few hours of my office are dedicated to just publication and writing manuals and procedures and discussing safety, and few hours are very, very, I would say, I cannot predict what is going to come because of the nature of operation. So that happens at work, and when I come back, I sometimes I get exhausted and I do not do anything except watching Netflix, and sometimes I work on my platform called the Gateway. And if there are, for example, in April I did a lot of sessions for youth that I used to do after I come back from the office, and currently I'm preparing for another session which I'm going to do, if you have seen, on July 3rd. So I'm preparing for that. That's what I do. Wonderful. I study different courses, so that can happen on cell phone. So वो मैं तो अपना relaxed position में बैठ के वो study करती रहती हूँ. Samra, Deepa को question connect करूँगी मैं यहाँ पे, and I would like to ask, माशाल्लाह इतने सारे tasks you've given us, obviously an insight of how you go through publications and you prepare documents and you in a standard work day, and then during the evening you're probably spending time towards preparing the session. So what is that one thing that really excites Samra, specifically when we talk about your work, a task that might be assigned to you? What is it that would make your day very exciting to start off with? I get extremely excited when I do training need analysis within my cabin crew community, and when I find out that there is a huge gap, and when I find out that I need to address that in terms of training and publication, that it really keeps me going, because I don't know, I have this drive, that this interest towards bridging those gaps, because my aim is in aviation, Pakistan Aviation Industry, cabin safety side. My aim is to bring theoretical training closer to practical training, and there is a huge gap, I must say. So I would rather make theoretical SEP, if you're aware of the term, safety and equipment procedure,
theoretical SAP and make it more like applied SAP. जैसे physics होती है theoretical और applied physics होती है, so I want to make applied SAP instead of theoretical, and not instead, like more applied SAP and less theoretical SAP. So this is my aim, and I keep looking for ways, and I train myself through different courses how to develop more interactive and more applied kind of courses out of theoretical courses. That is really, really interesting for me. I can go for hours and hours of work if I have to make trainings and syllabuses and tell cabin crew how to do things. Wonderful, Samra. Dekha Fatma, कि Miss, despite of being so busy and being having so important title, engaging in a lot of different professional commitments, Miss ki drive towards learning new things and skills, giving a wonderful and strong message to our young people and aspiring aviators. So Samra, आपने इतना कुछ बताया कि you are doing so much, mashallah. Is there one thing which is close to your heart, one accomplishment, it may be professional or personal, you are most proud of? Just one thing. I know it's hard for you because you are doing, mashallah, a wonderful job. To encompass my career, or which obviously had help. मेरी बॉस की बहुत ज्यादा मदद है उसके अंदर, मेरी वालदा की सबसे ज्यादा मदद है उसके अंदर नेचुरली. तो उस सारे को अगर एक दरिया को कुएं में बंद करें, तो the thing I'm proud of is my acceptance towards change. This has really helped me in my career and my family life as well. कि अगर कुछ मुख्तलिफ होने लगे या कुछ बदल जाए, तो उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लें पॉजिटिवली, तो उसकी वजह से हमारे रास्ते खुल जाते हैं और हम तरक्की की तरफ जाते हैं. मुझसे एक दफ़ा किसी ने, इफ आई एम नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, मुझसे एक दफ़ा किसी ने कहा कि आपने एक ही कंपनी में इतने साल गुजार दिए, तो आपके अंदर ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो ड्राइव नहीं है, या वो आपको खौफ है कि आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में नहीं जा सकते. तो मैंने उनको कहा, मैंने एक कंपनी में 1 साल गुजारे, मैंने एक पोजीशन पे कई साल नहीं गुजारे. फुली जो मुझे एडिशनल पोर्टफोलियोज मिलते गए, एक के बाद एक ज्यादा 3 से 4 साल के गैप के बाद मुझे मिलते गए. आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. मैं बिल्कुल एक कैबिन क्रू ट्रेनी के तौर पे आई थी. I was 19 and a half when I joined Airblue. और उसके बाद मुझे एक पोर्टफोलियो संभालती थी और एक और मिल जाता था, एक और संभालती थी, एक और मिल जाता था, थैंकफुली. तो इस वजह से मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं एक ही कंपनी में, क्योंकि मेरी ग्रोथ रही. और मेरी ग्रोथ इस वजह से रही क्योंकि मेरे अंदर एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स चेंज थी, और उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको स्टडीज करनी पड़ती है, और स्टडी करते रहने से ये मेरे लिए आसानी होता है. I would give all the credit to my mother though. उन्होंने मुझे ऐसा डेवलप किया, ट्रेन किया. अच्छा समरा, यहाँ पे obviously आपकी माशाल्लाह the way you've described how you've moved from your very initial start in your company and then obviously moved up mashallah ladders. There are ये थोड़ा सा एक aspect आपकी personality का ये भी दिखाता है that you want to be the best in what you do. Consistency and then going out of your way to achieve your goals. तो कभी-कभी ऐसे भी होता है, there are instances in which you don't really come out with the best result. कुछ ऐसा शेयर करेंगे, कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ हो जहाँ पे you weren't really pleased with your performance and वो जो downfall एक sudden थोड़ा सा down आपकी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक dip आता है performance के अंदर, उसको भी deal कैसे करती हैं आप? It is very natural, बहुत नेचुरल है कि किसी की भी परफॉर्मेंस का डिक्लाइन आए, क्योंकि जब आप वर्क होते हैं या ज्यादा वर्क करते हैं या किसी भी वजह से, अगर आप ह्यूमन है, लिमिट्स होती हैं, आप किसी और जगह पर्सनली एंगेज होते हैं, तो फिर आपके परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आता है, एक्सेसिव वर्क करने से भी आता है. तो यस, ऐसा हुआ, कई बार होता है. पब्लिकेशन बनाई, ढेर सारी इतनी मोटी किताब बना के भेज दी, रेगुलेटर को भेज दी कि आप पढ़ दें, अप्रूव कर दें. रेगुलेटर ने ढेर सारे फीडबैक के साथ वापस कर दी कि इसमें तो ये खराबियां. तो यस, ये होता है. और रिसेंटली व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट माय पोर्टफोलियोज, तो मेरे पास अभी रिसेंटली 6 पोर्टफोलियोज हो गए थे जो कि मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थे कोप करना. तो उसमें मेरी ट्रैवलिंग एक्सेसिव बढ़ गई, बहुत बढ़ गई मेरी ट्रैवलिंग. इस साल मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है जनवरी से अब तक, तो उस
वजह से मुझे अपने पोर्टफोलियो से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी ही सेहत और अपनी ही दूसरे काम के साथ जस्टिस करने के लिए, ऑल्दो मुझे अफसोस था, लेकिन मुझे ये फेयरली करना पड़ा, क्योंकि दूसरी चीज़ों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा था और मेरी दूसरी चीज़ों की परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आ रहा था। Wonderful, Miss Samra, or the way you are telling it, it's giving a wonderful and huge and strong messages to everyone who is watching. You are doing so much and you are trying to make it work, and despite of the fact being on top of certain position, you are not just sticking to that position only. You are seeking different ways to benefit people around you. This is what I can see from your experience and profile. Is there anything else, Fatma, would you like to ask, or should I go ahead? Because I want to ask. I would want to ask Samra the very next thing which is quite relevant to her, and हमें उसकी कुछ झलकियां नजर भी आ रही हैं और मेरे ख्याल से समरा को बताने की जरूरत नहीं भी पड़ रही, तो हमें पता चल रहा है. समरा, you obviously are a super hero. मैं सिर्फ हीरो नहीं कहूंगी, सुपर हीरो कहूंगी आपको. Indeed. अपनी सुपर ट्रेट भी अब बता दें. What is that one thing that you think makes you probably, I don't know, invincible, or probably something that you're really proud of, something that stands out in Samra? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप वो खवातीन हैं जिससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ, कि आप जो काम करते हैं वो मुश्किल भी है और थरा स्टडीज वाला काम, तो आप दोनों से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ. We are honored. We are honored. और ऑनेस्टली आप सब इंसान सिखाता ही है, और आपसे भी हमने सीखा है, आपके सेशन से सुने मैंने, मैं बहुत सीखती हूँ. So other aspect of, there's always different aspects of things. Superpower is I ensure I respect others. I ensure I like human beings. I ensure I respect animals, and I ensure I respect my surroundings and non-living things as well. For example, I will not pick up a pencil and make a graffiti on table. I will not litter around. Although मैं चीजें फैला जरूर लेती हूँ अपने इर्द गिर्द काम करते में, लेकिन मैं किसी भी, अगर फर्नीचर का पीस है, दीवार है, I would not destroy it, ruin it. I get upset when I see chalking and litter. तो 3 चीजों की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इंसानों की, जानवरों की, और अपने सराउंडिंग्स की, और नॉन लिविंग थिंग्स की. ओके समरा, यहाँ पे जैसे फातिमा ने बात की आपके सुपर ट्रेड की, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग. यू विश टू नो, you wish you had known it before you start your career, or during your early career, or during the time when you begin your career. So was there anything, is there anything that you think कि अगर मुझे ये पहले पता होता तो I could have done something differently, I could have started from that thing? There are many things, I would say I regret that I was able to do my studies, but I regret that I started with the delay. कि अगर मुझे मैं उम्र कम होने की वजह से मैं अपने वर्क के साथ इतनी ज्यादा बिजी हुई कि मैंने उस तरह फोकस नहीं किया, और जब ध्यान आया तो कंप्लीट किया. लेकिन अब ये होता है कि अगर उस पहले कर लिया होता तो अब पीएचडी की तरफ जा रहे हो या कर रहे हो. So although I will do it, but I regret that I did it with them. But I know you'll make it, and I know the strong, determined person you are. Fatma, would you like to ask anything? और या मैं पूछ लूँ कि आपने इतनी सारी different बात की starting from your first interview till now कि you felt कि एक yearly career decision था जो आपने लेना चाहिए था, लेकिन you have taken it anyway. How was your experience with your first boss? You are still in your first job, but like you said, you have been dealing with different profiles and assignments. So how was your experience with your first boss? Is there any takeaway that you have taken from your first job, or anyone you would like to talk about? It can be the other person or other boss as well. My first boss naturally was my mother, is my current boss as well. And my first work boss was when I worked in a computer institute when I was around 13 or 14.
मैंने अपना बेसिक डिप्लोमा ऑफ आईटी किया था उस टाइम में। उस टाइम नया नया कंप्यूटर का एजुकेशन शुरू हुआ। दैट इज समवेयर अराउंड 1998। आप लोग बहुत छोटे। तो उस टाइम पे मैंने जब वो जो कोर्स था वो कम वक्त में कंप्लीट किया, तो मेरे जो बॉस थे वहाँ के उस इंस्टीट्यूट के जो ओनर थे, उन्होंने कहा कि इनको आप और कोर्सेज करवाएं, लैंग्वेज ओरेकल वगैरह, और जैसे बार्टर सिस्टम होता है, और उसके बदले में ये हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा देंगे। तो आई वाज टीचिंग वेरी, आई वुड से एल्डर पीपल देन मी, टीचिंग कंप्यूटर्स, एमएस ऑफिस। वो मेरे बॉस बहुत अच्छे थे। वो बॉस थे मेरे, वो बहुत अच्छे थे। बेटा खाना खा लो, अब खाने का टाइम हो गया, अब बैठ जाओ, अब इसको पढ़ा दो, अब इसको पढ़ा दो। एंड ही वुड गिव मी अ ब्रीफ कि इतना इसको पढ़ाना है, इतना इसको पढ़ाना है, स्कोप बता देना। सो आई वाज प्रीटी मच वेरी, आई वुड से इन द लाइन ऑफ कॉर्पोरेट सॉर्ट ऑफ व्हेन आई वाज वेरी यंग। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद सॉरी इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैं एयरब्लू में आई। फिर मेरे बॉस लिपि डिसूजा, जो मेरी फर्स्ट बॉस है, करंट बॉस हैं, उनसे मैंने बहुत बहुत सीखा। उनसे मैंने पढ़ाई करना सीखा, उनसे मैंने बात करना सीखा। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। आप लोग सोचोगे बात करना तो हम सबको आती है, नहीं नहीं, उनसे मैंने वाकई बात करना सीखा, बात कैसे की जाए। और उनसे मैंने बहुत, आई मीन सब कुछ मैंने उनसे सीखा है। एक कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर कैसे होता है। फ्रॉम आई स्टार्टेड विद अ ब्लू कॉलर जॉब, एंड आई एम currently in a blue collar job. I am a flight attendant. I'm doing this white collar as well, and everything from the blue collar till white collar and ongoing. She's there, and what I take away from her is education. Yeah, importance of education. But that's very inspiring, समरा। आपने अभी जो बात कही कि बात करना सीखा, मेरा ख्याल है ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हम बहुत कैजुअल ले जाते हैं, बट इट्स इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर लिसनर ग्रैस्प टू व्हाट यू से। और फिर वही वाली बात कि आपकी बात इट टचेस द द हार्ट एंड द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट यू कनेक्ट विद। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली मैं और अदीबा हम दोनों आपके साथ बहुत लेवल्स के ऊपर कनेक्ट कर पा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल वे दैट यू स्पीक। अच्छा समरा, आपने ऑब्वियसली बहुत सारी स्ट्रगल का भी जिक्र किया है। यू स्टार्टेड ऑफ अर्निंग मनी एट अ वेरी यंग एज, एंड देन बिट्स एंड बिट्स आपकी पता चल रहा है यू हैव हैड अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल, जो जिसके बाद आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। would you like to please share with us one challenging situation, probably I don't know early from your early career या current भी जो आपकी assignment थे उनके अंदर कोई एक past कोई challenge याद रह गई, या कोई बहुत challenging situation थी in which you actually felt you have outdone yourself? Yesterday only I was giving this short video. I made this short video for my session, and उसमें मैंने एक situation बताई थी। ऐसी situation मेरे साथ एक बार नहीं हुई, ऐसी situation मेरे साथ कई बार हुई। कि मैं बहुत young age में cabin safety instructor बन गई थी, around 22-23। तो मेरे सामने मेरी जो audience हुआ करती थी वो बहुत बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते थे, नेचुरली बहुत तजर्बे वाले, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत दुनिया देखे हुए। तो उनको हैंडल करने में मैंने चैलेंज देखा है। ये एक फैक्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का फैक्ट नहीं है, ये पूरी दुनिया का फैक्ट है। किसी नए को या किसी डिफरेंट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उनको भी, ऑडियंस को भी, मेरे केस में ऑडियंस को भी बहुत चैलेंजिंग लगा। और मैंने इस तरह की चीजें फेस की, और द ओनली वे आई कुड in that moment, yes, I felt bad, I was sad, I was upset, I felt insulted, but because of people around me like my boss and my mother, I was able to cope with it. And lots of people gave me that challenge, came back to me, apologized and said, "Okay, we were wrong about you." That happened, and I'm sure हर एक के साथ हुआ होगा। ऐसा होता है, youngsters के साथ बहुत होता है। I would please say कि उस तरह के चैलेंज में immediate react नहीं करना चाहिए, नहीं करें, कभी भी नहीं करें।
थैंक यू सो मच फॉर सेइंग इट। सो जिस तरह से आपने बताया और अभी एक बहुत अच्छा सा मैसेज दे दिया उन सारे यंग एस्पायरेंट्स को जो कि हु आर ट्राइंग टू मेक इट इन द इंडस्ट्री, एविएशन हो या कोई भी, तो इज इट इजी टू फाइंड someone who is there to tell you कि do this or do that, और easy words में जो कि आप करती भी हैं और कर भी रही हैं कि is it easy to find mentors in aviation या generally, और इसी से आपका नेक्स्ट सवाल हम कनेक्ट करेंगे once you answer it. अदीबा, नॉलेज हर कोई इम्पार्ट कर रहा होता है, नोइंगली और अननोइंगली। जैसे आपके सवाल से मुझे ये नॉलेज मिली कि ये आपने इम्पार्ट कर दी मुझ में ये नॉलेज कि इज इट इजी टू फाइंड। सो या आई एम नाउ थिंकिंग कि बहुत सी ऐसी दफा मैंने बहुत सी ऐसी चीजें ऐसे जैसे कोई कुछ गलत कर रहा है तो मेरे अंदर अगर आइडेंटिफिकेशन है उस गलत की कि ये गलत है तो मैं सीख लूंगी कि मुझे ये नहीं करना। तो मेंटर्स तो आप इनवॉलंटरीली भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई वॉलंटियर करे अपने आप को कि यार मैं आपके लिए मेंटोर हूँ तो आप मुझसे सर्विस ले लो, नॉलेज में इम्पार्ट कर दूँ। आप अपने इर्द गिर्द से चीजें सीख सकते हैं। आप में वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप उन लोगों से, और एक्सपीरियंस्ड लोग जब बात करते हैं, जब 4 एक्सपीरियंस लोग फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट मीटिंग हो रही है और उसमें सारे हेड एचओडीज बैठे हुए हैं और मैं बैठी हुई हूँ, मैं अक्सर सुन रही हुआ करती थी। जब एक टाइम पे मैंने ऑफिशिएट किया था, बॉस मुल्क से बाहर थे, तो मैं तमाम लोगों की बात सुन रही होती थी और आई यूज्ड टू, किसी ने मुझे कहा नहीं कि तुम्हारी नॉलेज के लिए है, बट आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ इट, a lot from that meeting, for example lots of meetings। अच्छा ये ऐसे भी होता है। सो नॉलेज हर कोई इम्पार्ट कर रहा होता है वॉलंटरीली एंड इनवॉलंटरीली, ये हम पे बड़ा डिपेंड करता है कि हम कितनी अब्सॉर्ब कर लें। एंड यस देयर आर अदर पीपल्स हु आर वॉलंटरीली मेंटर्स, आपको एविएशन इंडस्ट्री में बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। आपके जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक और लिंक्डइन पे, उन पे भी बहुत मेंटर्स मौजूद हैं। Okay, यहाँ पे Samra, I would want to ask, since आपने obviously mentors की पहचान बताई है, what is it actually that we have to look for? It's not going to be an individual, but it's actually going to be the experience the individual probably has to share with you, or the knowledge or the wisdom that the individual is sharing. तो यहाँ पर ही अदीबा ने जैसे आपने कहा था कि हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करना है वो यही होगा कि इफ यू कुड प्लीज शेयर विद अस, ऑब्वियसली यू हैव नेम्ड 2 मेंटर्स अभी ऑलरेडी, but we'd like to hear more about them. Again, if you can please share with us a female mentor and a male mentor, and दोनों के individual roles में बताइए how important is it to have a male mentor or a male ally throughout your career, and as well as the role of female mentors, or probably if I could say female leadership, does it actually impact your career or even your aspiration to go forward in your career? Yes, balance of both genders would be important. However, since I'm already surrounded with lots of females and my boss is a female, and so there you go, female mentor. And my male mentor is there are many male mentors. On top of my head is Mr. Sir Richard Branson. I read a lot about him, and I actually, when I make slides of soft skills, I actually go through his sayings and his articles, and then I pick things from his articles and sayings, especially when I'm making customer service and internal customers like employees training. So उनकी चीजें मैं बहुत pick करती हूँ. So I would say that he is a very very huge knowledgeable and experienced person who had brought change to aviation industry because of his mindset. थैंक यू सो मच समरा फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट के मेंटोर जरूरी नहीं है कि वी हैव टू बी इन कांटेक्ट विद द मेंटोर। हम एक, और जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में भी कहा कि अगर if I have that drive to take out positive from the people and what they are saying, I can take that positivity out from a very well known or a normal or a common person as well. So thank you so much. So how you have told us about getting in the job in the field very early in your life, और आपने माशाल्लाह इतने डिफरेंट जॉब रोल्स देखे हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स देखे हैं, एंड इट माइट बी हैपनिंग टू यू कि जब आप किसी को देखते होंगे, किसी यंगस्टर को,
तो वो आपको सारा फ्लैशबैक देता होगा कि आई वाज लाइक दिस, आई वाज लाइक दैट, और आपको कुछ की पॉइंट्स की इम्पोर्टेंस शो करता है. तो डू यू रियली थिंक कि इंटर्नशिप्स और एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज जो हैं with the early education, how important it is, or what role do they play? Would you like to highlight some of it? It's extremely important. Internships are important in terms of transition from university or educational life, academic life to your corporate life or work life. The transition is extremely important. Everything transits. आप अपनी बचपन से जवानी में ट्रांजिट करते हैं, जवानी से बुढ़ापे में ट्रांजिट करते हैं, तो गॉड हैज मेड लाइक दिस, नेचर ने ऐसा ही बना है. तो instead of jumping abruptly from one place to the other, one world to the other world, like academic world and corporate world, internships help in transition. Extremely, extremely important. Given the right given the right options and opportunities. Fatma, is there anything? Thank you, Samra, for highlighting the importance of internships. मेरे कुछ दो सवाल होंगे, छोटे-छोटे दो सवाल हैं. Put them in two different parts. The first is, how easy do you think is finding internships now as compared to obviously when you started with your career? Specifically because I'm quite sure a lot of young students who are going to graduate from universities are going to be listening to your wonderful talk. तो ये जरूर बताएं कि how easy is it, do you think कितनी opportunities available हैं internships के लिए? And इसी के साथ थोड़ा सा connect करूंगी question को कि internships obviously आपको एक opportunity देती हैं to create networking with the available professionals and your career as well. So how important do you think is networking prior to starting your career or in seeking a job specifically in the current networking with the corporate employees, you mean? Corporate employees, or definitely for people who might help you, professionally in your career, for your growth, and also for job seeking as well. Okay. To answer your first question, is how important is its internship and will they be available? Internships will, in aviation industry at least, internships will be available after a little passage of time, because of the industry is now going towards revival, not as revived as yet. As you know that our major operational routes are still closed. It will take a while, but yes, project base in the internships will be there. For example, aviation industry, जब season होता है तो फिर internships निकाली जाती हैं हर department में. एक project है हर का एक, और कराने के लिए for a passage or period of time हमें employees की ज़रूरत होती है, industries को employees की ज़रूरत होती है. तो उसमें we have given chances to students previously when they were corporate during high school. So I believe this year there's no project like that. Internship will be there, but not very soon. To answer your second question is how important is networking. Networking is extremely, extremely important. I also get a lot of messages from students, and students who I studied with as well, that they seek information. So one thing I would like to tell them is, whenever they're seeking information about a job and contacting anybody from the corporate industry, do not first say आपसे बात हो गई है, so it means that I'll get a job. It is actually, but a person like me, what I can do is get them to an interview, and after that it is all them. They have to impress the panel, they have to at least show what is in their CV, and I can help people go through an interview session, prep interview session during my personal time, yes, with no charges, because that will be unethical. I can help them, but they need to understand that there are
ethics and mannerism is there to talk to anybody, forget corporate industry, to talk to another human, and they need to understand that. And because I'm saying this out of my own experience, I recently asked somebody not to ask me to that if he or she is talking to me, said the job is done. I told them how it works, and then in the last I wrote that I'm sorry, but I did not appreciate how he thought or she thought that I would be able to give them a job, because it's not in my power, it's in theirs. So I would request people to go prep, ask questions how to get prepared for an interview. Anybody will help, recruiters will help कि आप प्रिपरेशन कैसे करें एक इंटरव्यू की। तो नेटवर्किंग करें, जरूर करें, और ask all the right questions, जरूर मदद करेंगे आप। I know I will. Perfectly answered. Thank you. This is exactly what we thought you would be definitely sharing with us. Because often networking को consider ये किया जाता है, जैसे आपने rightly बेड़ा start में ही identify कर दिया कि once you have spoken to a person, it means the job is done. अब आपको अपनी skill सामने नहीं लेके आनी, unfortunately, या your skill won't matter, but it's the word of the other person that's going to matter into getting your job or something. So yes, thank you very much, Samra. Thank you. I'm sure वो की भी मजबूरी ही है, क्योंकि jobs इस वक्त market में नहीं है. I'm sure they're coming somewhere. They're under a lot of stress, but they need. These are things that cannot be ignored when coming for an interview or talking to somebody. इतना ज़बरदस्त सा आपने जवाब दिया. I would like to ask, is there anything about claiming the title, be it a job, a scholarship, or any award, because you have your extensive study about human, their behavior, and associated work that they do. So is there anything that you have claimed yourself going forward कि yeah, I deserve this, जो कि मुझे इसकी importance का अंदाज़ा different studies और different communities की membership और association के बाद हुआ कि we usually as human, I'm not just talking about males or females only, we usually don't come up and say कि okay, I deserve this, I can apply for this. So has there anything in your career or in your profession कि आपने कोई job, title, scholarship, award, something you claim for, or how it affects your life or someone's life? Okay, I did claim for a title with my current organization. There was this recent, about 2 years before, there was a title introduced specific to cabin safety, and it came through regulatory body. When I checked the requirements of the regulatory body, I had all of them, and I actually was working on all of them already. So I asked all the stakeholders within my company, and I sent them a professional request that I feel myself competent enough for this title. I would like to get interviewed for it. There were a few more people from outside and within the company. We all went through the same process, and we were given results since I was getting chosen. So ऐसा ना लगे कि अपने ही इंसान को फेवर दिया गया है, तो सबको बिठा के सारे रिजल्ट्स डिस्क्राइब किए गए कि ये आपके रिजल्ट्स हैं, ये आपके रिजल्ट्स हैं, और ये आपने परफॉर्म किया. और एज भी बताई गई, since she has the edge of working already on these areas, and you will still have to learn to work on these areas, so she will get the title. I got the title. Wonderful. That is very Aiming for a inspiring. title is not wrong. If somebody thinks that they can do something, they should go up to their boss and can ask for it. But then asking how to ask is another ball game and another question. And I was about to ask you, okay, how much strength or a gut feeling does it take, or what does it take for me to go up and say that I deserve it? If you would like to give some tips, points regarding it, because you have your experience, and I want people to benefit from that experience. Okay, it's okay, it's not bad, because apparently at times people look down upon you if you are up there claiming a title or claiming any award. So if you would like to share, discuss something about it. Thank you. Beautiful question, Adiba. अगर मुझे कोई चीज के लिए क्लेम करना है, तो मैंने इतना होमवर्क करके जाना है कि मुझे ना सुनने को ना मिले. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लास्ट 2021 चल रहा है, तो 12 years से जो एक मैंडेटरी पब्लिकेशन है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे डिपार्टमेंट की रेगुलेटरी पब्लिकेशन है, वो मैं बनाती हूँ विद अ टीम. आई हैव अ ब्यूटीफुल टीम ऑफ विद इन माय एरिया. उनके साथ मिलके मैं बनाती हूँ, और इट हैज बीन थ्राइस दैट वो
पब्लिकेशन पाकिस्तान सिविल एविएशन में एक्सेप्ट हुई है, स्टैम्प हुई है और वो हमें वापस दी गई है कि ये अब आप चला सकते हैं। दैट आई वुड से वाज इनफ प्रूफ। और वो पब्लिकेशन ऐसे नहीं बनती कि सिर्फ और सिर्फ उसको अपडेट कर दिया हेडर फुटर और बन गया। पब्लिकेशन काफ़ी रिसर्च और काफ़ी पढ़ाई के बाद बनती है। हर बार जब जब उसकी नई रिवीजन या एडिशन आनी होती है, हर पब्लिकेशन ऐसे बनती है। उसमें काफ़ी टाइम होता है, लाइक दिन कब रात कब मुझे नहीं पता। वो बन जाती है, टाइमली हो जाती है, डांटे भी पड़ती हैं, वापस भी आती है कि इसमें ये गड़बड़ है, इसको सही करो। तो या अगर मैंने वो कर लिया था तो मुझे पता था कि मुझे ना नहीं मिलेगी। मैंने 3 बार किया हुआ है वो पाकिस्तान सीए में सबमिट, और तीनों बार उसके 3 एडिशंस मेरे हेड में प्रोड्यूस होके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स मुझे सब ऑर्गेनाइजेशन ने, मेरे बॉस ने सिखाया है। एंड देन शी आल्सो न्यू के रिजल्ट्स हैं। तो प्रोडक्टिविटी जब आप क्वांटिफाई कर पाते हैं, व्हेन यू कैन क्वांटिफाई योर प्रोडक्टिविटी, व्हेन इट इज टैंजिबल, इवन इफ इट्स हमेशा इट कैन बी क्वांटिफाइड। अगर मैं कस्टमर सर्विस एजेंट हूँ और मेरे ड्यूटी शिफ्ट के अंदर ज्यादा टिकट्स बिकते हैं एयरलाइन के, तो समझ आएगी कि मैं ही कुछ ऐसा कर रही हूँ ना। क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्टिविटी। I would say basically ये this is a perfect example of how to be on top of your game, वो जो एक मेरे ख्याल से phrase use किया जाता है। पहले कर लो फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू समरा। समरा इधर से ही थोड़ा सा और कनेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली आपने अपने एक दूसरे वेंचर का भी जिक्र किया विच इज द गेटवे, जी जी। and you mentor youngsters in it, and specifically आपने जैसे mention किया कि you focus on underprivileged children as well. तो इसी से थोड़ा सा बताएं, how important you think it is to give back to the community that you belong to? Obviously community building का concept कितना important है? Obviously each one of us is leading a professional life and हर किसी के professional career struggles भी हैं, but then again there is an aspect जिसके अंदर there is a need of each one of us to give back to the society, and मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर कोई इस चीज का जवाब नहीं देगा क्योंकि आप काफी अरसे से इस काम में भी अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो इस पे प्लीज अगर कुछ हमें आप कमेंट करें। जी फातिमा, thank you very much for asking this question. Giving back is equally important as I was given something by my elders and experienced ones. अगर मैं अकेले ही अपने जर्नी पे चल पड़ती, मैं सक्सेसफुल तो नहीं होती। Imparting knowledge is extremely important, but इस बात का ख्याल रखते हुए कि जिस जनरेशन को अब आप इम्पार्ट कर रहे हैं वो एक नई जनरेशन है, उनका थॉट प्रोसेस, उनके मेंटल मॉडल्स, उनका अटेंशन स्पैन का डिलीवरी का तरीका is extremely difficult. So first, the person who is imparting knowledge and giving back to the community must understand their audience instead of telling them to replicate what I have done. जैसे जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था अपनी सक्सेस के लिए, प्रॉबेबली वो दुनिया में शायद किसी एक भी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होके कामयाबी ना दे, क्योंकि उस फॉर्मूला में इंटरनल जो मेरे एलिमेंट्स थे वो तो मेरे लिए काम कर गए, जो एक्सटर्नल थे उन पे तो उनका कंट्रोल नहीं है ना, जिन एक्सटर्नल एलिमेंट्स ने मेरी मदद। So yeah, whenever giving back to the community, a new generation especially, we must understand who are we giving it back to, what is their mental model, and what is it that they will be able to understand. And if they have questions, for example, they would immediately, because of their own experience, they would immediately deny what you're saying. And if you do not have enough research done, और research papers नहीं पढ़े हुए होंगे और उनको समझा हुआ नहीं होगा, तब आप सही इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे। हमेशा अपने स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसका लेवल क्या है, क्योंकि अब आपको पता है जनरेशन Z is very different than who we are or who I am, so we need to understand that. Yeah, thank you so much Miss Samra for concluding it very well. और मैं आपसे एक बहुत बड़ा क्लीशे सवाल करना चाहूँगी और उसके कुछ glimpses हमने देख लिए हैं during the interview. So what are your plans for next 5 years? If you would like to highlight some of the things, not all, if you would like to. I would go for my niche will remain cabin safety, and there would be an additional thing which I would be pursuing is complete training and development of corporate industry entrants and existing employees. That's what I plan on doing. Okay, so हम कहाँ देखेंगे इंशाल्लाह in next 5 years Miss Samra को? Obviously doing current job तो नहीं मैं बात कर सकूंगी क्योंकि वो सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। obviously. My personal venture of the gateway, I'm going to make it more tangible. Wonderful. All the blessings and best wishes for it, and wish you all the very best for doing
whatever you are doing and all the wonderful things. फातिमा, इसके बाद हम थोड़ा सा एक फन राउंड है हमारा, हम थोड़े से 3-4 सवाल आपसे करेंगे वन बाय वन, और रैपिड फायर राउंड है हमारा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम. फातिमा, स्टेज इज योर्स. जी, थैंक यू अदीबा. यस, मैं थोड़ा एक्साइटेड होती हूँ उसमें कि मुझे मजा आता है कि जब रैपिड फायर के अंदर ऑब्वियसली वी गेट टू नो समरा लिटिल मोर एज वेल. अच्छा समरा, कुछ शॉर्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे आपसे एंड वी लाइक टू हैव क्विक आंसर्स एज वेल ऑन टू दिस. तो विदाउट एनी फर्दर अडू, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा उसका लंबा नहीं खींचती. पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इफ यू वर नॉट ऑब्वियसली अ केबिन सेफ्टी मैनेजर और इन योर करंट फील्ड, व्हाट इट वुड बी कि आप कर रही होती? डॉक्टर. डॉक्टर होती, जबरदस्त. और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपको डॉक्टर समरा तो देख ही लेंगे इंशाल्लाह. अच्छा समरा, दूसरा सवाल ये होगा मेरा कि इफ यू वर गिवन अ चांस टू इन्वेंट समथिंग, व्हाट इट वुड बी? आई वुड इन्वेंट एन ऐप जो कि एसी का काम करेगी. वंडरफुल. आप इंजीनियर हैं, आप बताएं कि नहीं हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. द बेसिकली नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन है ना, तो ऑब्वियसली वो चीज जरूर उसको इनिशिएट कर जाती है फातिमा. लाइक बहुत बिल्कुल, आई एग्री. हाँ जी. अच्छा, तीसरा सवाल मेरा कोई क्या होगा कि ऐसी कौन सी रिसोर्सेज हैं जो आप फेवरेट रिसोर्सेज रही हैं अभी भी और अर्लियर इन द करियर? कोई किताबें, कोई वेबसाइट, एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू रिकमेंड? पेपर बुक्स, ऑडियो बुक्स भी होती हैं, एप्स में भी बुक्स होती हैं. पेपर बुक्स पढ़नी चाहिए. द फील ऑफ द बुक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सेकंड इज ऑल टाइम इंपॉर्टेंट गूगल. डेफिनेटली. समरा, कोई एसी के साथ थोड़ा सा एक एडिशनल सवाल वैसे करिए, कोई एक बुक रिकमेंड अगर आप करना चाहें करंटली, अगर आप पढ़ रही हो, बेशक कोई हमें हमसे शेयर करना चाहें. करंटली मैं 2 किताबें पढ़ी हूँ. एक सेपियंस के नाम से है और एक स्टीवन हॉकिंग्स के नाम की लिखी हुई किताब है, ब्रीफ आंसर्स ऑफ बिग क्वेश्चन. वो पढ़. ओके. इट्स जस्ट अबाउट यूनिवर्स. जबरदस्त. अच्छा, आपका कोई फेवरेट, योर आइडियल और योर फेवरेट एविएटर, somebody you look up to? आपके जो पैम्फलेट्स हैं उनमें उनके कोट्स होते हैं. द लेडी पायलट. कल भी मैंने एक कोट पढ़ा है उनका. If you Amelia want to Hart. yeah, if you want to get something done, you have to get it done. Wonderful. बिल्कुल ठीक. Last question मेरा ये होगा, Samra, one thing, if you can change one thing globally, what it would be? Pollution, trash. पूरी दुनिया का पैसा. और यहाँ पे मैं लास्ट एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी. व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? व्हाट इज दैट वन थिंग जो समरा बहुत एंजॉय करती है? म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, मूवीज, वाचिंग एक्शन मूवीज एंड वाचिंग हॉरर. ऑल्दो मुझे डर लगता है लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ. You enjoy that challenging thing. Thank you so much, Samra, for giving us your time and giving us this wonderful session. We talked about acceptance, learning, skill set, drive, dedication, and importance of healthcare and being a responsible citizen. And wish you good luck. Fatima, thank you so much for joining in. And from my side, thank you so much. And stay connected for our next session. Fatima. Thank you very much, Adiba. Thank you for giving this again a wonderful opportunity to connect with Samra. God bless you, Samra. I would wish you all the very best with all of your future endeavors, and it was definitely a session that I will remember till the end. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you so much. That's a lot of honor. Thank you. We are honored. Thank you so much, everyone, for joining, and stay connected for next session.